So let's start the class. Maybe barely तुम reach कर लोगे warranty. If 3 years आए तो हाँ तुम कर लोगे warranty. अच्छा बच्चों, आप सब अपने अपने माइक म्यूट कर लो। अगर किसी का माइक ऑन है बाबा से पूछ लो वारंटी की कहाँ है. वारंटी ईद के डब्बे में होगी क्या रिसीप्ट पे होगी. ओके हेयर का माइक ऑन। बेटा अपने माइक आप लोगों ने सबने देख के रखने हैं, ठीक है ना। अगर आपका माइक खुला हुआ होगा तो डेफिनेटली ये दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस होगी और मेरे लिए भी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा अगर सामने से किसी और की आवाज आ रही होगी ना, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब फील होता है. सो यू नीड टू कीप योर माइक्स म्यूट, राइट? एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू फॉर्मूला व्हिच इज एक्चुअली कनेक्ट the concentrations and concentrations of solution, right? So for example, if you talk about concentration, but so you can find out the moles by concentration as well. And the formula for that, it is concentration into volume, right? And the volume should be in decimeter cube, and this is the volume of solutions. But ये जो वॉल्यूम है ये सॉल्यूशंस का वॉल्यूम है. लास्ट जो फॉर्मूला में आपने वॉल्यूम यूज किया था वो गैसेस का वॉल्यूम था. एंड दिस इज द मेजर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फॉर्मूला. हम लोग परेशान इसी में होते हैं, हम लोग गलती इसी में करते हैं कि हम लोग जो है ना, जब ये वॉल्यूम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन को देखे बगैर 24 से डिवाइड करा के मोल्स निकाल लेते हैं. दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग. यू नीड टू कीप रिमेंबर अबाउट दिस कि अगर कोई गैस का वॉल्यूम गिवन होगा ना आपको, देन यू कैन डिवाइड बाय 24 और 24,000. बट अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ वॉल्यूम गिवन है तो डेफिनेटली इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस. और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को आप 24 से कभी भी डिवाइड नहीं कराते हो, ठीक है. यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, ठीक है बच्चों. सो लेट्स स्टार्ट विद this formula, right? For example, if I have a question like this. For example, I have what is the unit for concentration to identify? I think आप लोग परेशान रहेंगे, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ. Concentration का यूनिट होता है बच्चों मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और you can even write this in this way, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है ना. इन दोनों में से कोई भी यूनिट आपको लिखा हुआ नजर आए, आप समझ जाएंगे कि ये जो है आपके पास concentration given है, right? So for example, if I ask to calculate the number of moles, calculate the number of moles in, for example, I gave you 5 decimeter cube of 0.200 mole per decimeter cube KMnO4 solution, right? But so for example, this is the type of question we have. So how can we find out the moles over here? And this is a very consistent formula in the exam. Multiple times you would find the questions about this formula, right? So you need to keep remember this formula. It is very essential, right? So how can we find out the number of moles by this formula? We know that, but show that this is mole per decimeter cube. It means this is concentration. This is the concentration of KMnO4, right? Potassium manganate. And this is what decimeter cube. Decimeter cube is what? It is the unit for volume, right? You need to understand this. This is actually the volume given to us, right? And this is the concentration given to us. So we can easily find out the number of moles. If you are able to identify the things given to you, you can easily find out the number of moles. So we know that the mole is actually concentration into volume, if the volume is in decimeter cube. So the concentration is 0.2 and the volume is 5. So the answer will be 1 mole. Is that right, Bachu? Yes, sir. That's correct. Yes, sir. Right, sir. Okay, one more thing, Bachu. One more thing. If we just going to make it a little complex, so the examiner can give you the volume in centimeter cube, right? So it will be a little complex for you. For example, अगर आपको concentration तो हमेशा same रहेगी, it is always mole per decimeter cube, it cannot be changed, right? So concentration is always mole per decimeter cube, but examiner can do a thing with you कि वो volume किस में दे दे आपको, centimeter cube में दे दे. So we know that how can we convert the volume from centimeter cube into decimeter cube? How can we convert this? We need to divide the volume by 1000, right? If we divide this by 1000, so it is ultimately going to convert it to decimeter cube. When the units are same, then we can apply in the formula, right? Sir, we are given question always in decimeter cube.
In concentration. Most of the time, the examiner gave you the volume in centimeter cube. So you need to use divide by 1000, right? Okay, sir. And concentration is always in mole per decimeter cube, right? Right, sir. Okay, so for example, they are asking to calculate the number of moles in 300 centimeter cube of 0.33 mole per decimeter cube sodium carbonate solution. For example, examiner gave you to find out the number of moles in 300 centimeter cube of 0.33 mole per decimeter cube solution. And I know that you all are smart enough to identify that this is actually concentration, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, this sir. is what? This is the volume, right? Yes, sir. Bilkul. So we know that moles can be found out by the formula concentration into volume. And when the volume is in centimeter cube, so we must need to divide it by 1000, right, Bachu? Right, Right, sir. sir. So what will be the answer of this? It is actually 300 divided by 1000. It will give you 0.3, and when we multiply it with 0.33, it will give you 0.099. It will be 0.099 moles, right, Bacho? Yes, sir. Yes, sir. Yes, This is sir. actually the way to find out moles, and you need to keep remember, Bacho, this is the most important and the most consistent formula to find out the moles in the papers, right? You need to keep remember this formula very well, right? Right, Right. sir. So can we do some examples for that? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's Sure, talk sir. about some skill tests, and we know that we are very skillful, so we can do some skills, right? So let me find. Right. I have some questions for you, बच्चों. और मैंने आप लोगों के लिए ये questions निकाले हैं ताकि आप लोग इसको कर सको. Let me just find a question. अच्छा, जिसके पास मेरे notes हैं, उसके अंदर होंगे एक्सरसाइज ना, तो आप उसमें से भी निकाल सकते हो बच्चों. अगर किसी के पास मेरे notes हैं, तो वो उसमें से निकाल सकता है डायरेक्टली. Concentration. अच्छा बच्चों, one more thing. Can we? Yes, it is the question over here. So what is the group we have? Yes, there's one. I am just standing in both of the groups, right? बच्चों, मैं दोनों ग्रुप्स में आपको भेज रहा हूँ, तो आपको जहां से feasible हो आप वहां से चेक कर सकते हो इसको. और अगर आप बोलते हो तो Okay, मैं sir. स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ. Okay, मैंने दोनों sir. ग्रुप्स में भेज दिया, आप वहां से देख सकते हैं. मैं यहाँ पर ठीक है सर, देख लिख लीजिए. देता हूँ. आई थिंक मेरे पास कुछ बच्चे हैं न्यू, तो मैं उनके लिए यहाँ लिख देता हूँ. बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 mole per decimeter cube sulfuric acid, right? H2SO4, right? And the second one is, for example, you have 10 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube hydrochloric acid. आपसा क्या कह रही हैं, आप मुझे बताएं. आपसा क्या कह रही हैं आप बेटे? 0.200 और 0.2 का मतलब एक ही बात होती है, ठीक है ना? ठीक है आपसा? Third question, fourth question, and fifth question also we have over here. Third question is 100 centimeter cube of 0.5 mole per decimeter cube of nitric acid. And 25 centimeter cube. I'm writing all these questions just for you guys जो कि अभी तक ग्रुप में एडेड नहीं है, ठीक है ना?
तो आप लोगों ने इधर से देख के सॉल्व कर लेना है, और आपके पास मेरा नंबर डेफिनेटली होना चाहिए। आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, ताकि मैं चेक करके बता दूं आपको कि आपने सही किया है या गलत। ठीक है सर, हमने इसमें मोल्स फाइंड करने हैं सारे। जी, सब में आपने सिर्फ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं आगे। अभी हमने दो फॉर्मूला को बड़े स्ट्रांगली कर लिया है, ठीक है ना। अभी ये फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया है, जस्ट हम पहले मोल फाइंड आउट करेंगे, फिर इससे हम अच्छा जी, मेरे पास क्वेश्चन के आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। फराज का मैसेज आ गया मेरे पास। For example, with the same question, if I ask you guys to calculate what? Calculate the mass of the following. For example, if I ask you to calculate the mass of the following, तो हम क्या करते हैं? फिर हमें इसके अंदर क्या करना होता है? सबसे पहले तो हम मोल्स निकालते हैं। We know that the central point is always moles. हमें सबसे पहले मोल्स निकालने आने चाहिए। So first of all, we need to find out moles. So for example, if I solve the first one, so it is always what? Concentration into volume. And right now the volume is in actually centimeter cube. So I must need to divide it by 1000, right, बच्चों? Yes, sir. So what is the answer for this? I think you all did it correct. और हमें इसमें क्या करना था? हमें इसमें ये करना था कि concentration into volume and divided by 1000 हम करते, हमारे पास क्या आ जाते? Moles आ जाते। So it is actually divided by 1000 because the volume is in centimeter cube. So the concentration is actually 0.05 and the volume is 50 over 1000. So what is the number of moles over here, बच्चों? 0.025, I think. ये आंसर था आपका। 0.005. 0025 ये आंसर था। जी सर। चेक कर लेता हूँ मैं भी एक बार। It is 0.50 over 1000 and into 0.05. So it is 0.005. That's very good. Now we know that हमने क्या find out कर लिया बच्चों? We find out the moles. Now if we want to find out the mass, so we know that we can convert mass or moles into moles as mass as well. तो हम कैसे करेंगे बच्चों? मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? mr से। किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? mr से। And what is the mole we have? 0.0025. And what is the mr of sulfuric acid? It is 98. So if I multiply it with 98, so it will give you 0.245 grams, right? And if you are not able to find out the mr of sulfuric acid, so you can do this. Hydrogen is 1 and 2 hydrogen, that is why I multiply with 2. Sulfur is 32 and oxygen is 16 into 4. So it is 2 plus 32 plus 64. So it will give you 98, the mr of sulfuric acid. Is that right, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so first of all, you need to convert all these moles into mass, and then I am sending you one more file. You need to calculate the mass in that questions, right, bachcho? सर ये जो हमने किया इनके करने कन्वर्ट? इनको करते हैं एक क्वेश्चन। Now just look at over here बच्चों के ये पास पेपर में सवाल किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, आपको किस तरह से जो है तंग कर सकता है पास पेपर्स में एग्जामिनर। तो देखें कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर माय 3 स्टेप्स। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर द 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स का दामन नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन क्या है? HCl reacting with calcium carbonate
and forming what? Calcium chloride, carbon dioxide and water. This is the reaction, और एग्जामिनर ने आपको ये रिएक्शन दिया बैलेंस इक्वेशन के साथ, ठीक है ना। वो आपसे कहता है कि यू हैव 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, 0.75 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl सॉल्यूशन, राइट। एग्जामिनर आपसे कहता है कि यू आर हैविंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.75 मोल per decimeter cube HCl solution and you are reacting it with excess calcium carbonate. You are reacting it with excess calcium carbonate. The thing which is in excess, we don't need to care about that. ठीक है ना, हम कैलकुलेशन हमेशा करते हैं उससे जो कि हमें गिवन होता है, लिमिटिंग होता है, ठीक है ना। एंड दे आर आस्किंग व्हाट, वो पूछ रहा है बताएं व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फ्रॉम and what is the volume in decimeter cube of carbon dioxide produced. Now just remember my 3 steps. Just remember the 3 steps. सर ने बताया आपको कि सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, मोल्स निकालेंगे। मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, what is given to us। सबसे पहले तो आंखें खोल के देख लो, this is सेंटीमीटर क्यूब and मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है HCl का। HCl is not gas, it is a solution written over there. You need to keep remember कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा सर, ये कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय जी सर वॉल्यूम। Yes, concentration into volume, and we know that volume is in centimeter cube, so we must need to divide it by 1000 as well, right? So concentration is 0.75, volume है आपके पास 50 Right, sir. divided by 1000. What are the number of moles? Just check it. 0.00375. 0.00 सर 0. 375. एक आ रहा है 0. 0. 1 मैं 0. check कर लेता हूँ, छोड़े मैं check कर लेता हूँ। It is 50 over 1000 and जी सर, एक 0.0375. yes, 0.0375। ये आ गया मोल्स। बच्चों ये मोल्स किसके हैं? सबसे पहले तो आपको क्लियर रहना है कि ये मोल्स आपने HCl निकाले किसके, HCl के। और हमें मास किसका निकालना है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड का। तो डेफिनेटली अगर आप कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना चाहते हो तो आपके पास मोल्स भी किसके होने चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड के होने चाहिए। जी सर। अब कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स कैसे निकलेंगे, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा बच्चों क्या, रिलेशन। क्या लगाना पड़ेगा आपको, रिलेशन। और रिलेशन हमेशा लगता है किसके दरमियान, गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान। व्हाट इज गिवन टू यू बच्चों, HCl गिवन है आपको क्वेश्चन में। रिक्वायर्ड आपसे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अब आप इक्वेशन से देख लो, इक्वेशन में रिलेशन क्या है दोनों का, इट इज 2:1. 2:1. And what is the given condition to you, it is 0.0375. अब देखिए इसको जरा, इसको इमेजिन करें आप, ये चीज क्या है। ये चीज ऐसा है कि आपने लिखा है कि यार इक्वेशन में बताया जा रहा है कि if you have 2 moles of HCl so it is producing 1 mole of calcium chloride। यानी कि इक्वेशन बता रही है कि अगर आपके पास 2 मोल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तो वो 1 मोल बनाता है कैल्शियम क्लोराइड का। तो अब आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर आपके पास 0.0375 मोल्स होंगे तो कितने बनेगा कैल्शियम क्लोराइड ना। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, राइट। इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, उसके बाद इसको क्या करा दें आप, x की वैल्यू निकाल लें। तो x इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड व्हिच इज 0.01875, राइट बच्चों। राइट सर। And lastly, what we need to find out, the variable we need to find out is what, mass। हमें निकालना क्या था बच्चों, मास निकालना था। मास निकालना किसका था, कैल्शियम क्लोराइड का। तो we must need to use what, we must need to use the moles of calcium chloride and also we need to use the MR of calcium chloride। What do you say बच्चों, right or not? राइट सर, बिल्कुल सही है। So MR कितना होगा कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम is 40 and chlorine is 35.5 into 2, so it will give you 111, right? Yes sir, 1 Overall will be 111. So you need to multiply this with the number of moles, so you get the what, mass, and the mass is actually you got 2.08 20.08. No, 2 point. right? जी सर। ऐसी है। जी अब सर, देखें 2.08. ये हो गया मास के लिए। तो दोबारा से करते हैं इसको वॉल्यूम के लिए। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले दोबारा से मोल्स निकालेंगे। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इसी फॉर्मूले से मोल्स, तो हम वैसे ही निकालेंगे क्योंकि जो गिवन हमें पहले क्वेश्चन में था वो भी इसी में भी वही गिवन है। तो हमारे पास मोल्स कितने आ गए HCl के बच्चों, मोल्स आ गए हमारे पास 0.0375,
अब हमें निकालना है वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अब रिलेशन किसके साथ लगाएंगे? अब हम रिलेशन लगाएंगे HCl का, रिलेशन लगाएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। So it is HCl और कार्बन डाइऑक्साइड, again the relation is same 2:1 and the number of पाँच से भी moles सेम होगा। is again same which is 0.01875। अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड वेरिएबल है हमारा वॉल्यूम, एंड वी नो दैट जब भी किसी गैस का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में निकालना हो तो मोल्स को मल्टीप्लाई करा दो किससे? 24। ये गैसेस के लिए है खाली, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 24 से। यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 0.45 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है बच्चों? जी सर। Right. So this is actually the past paper type questions that you need to understand कि आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मिलेगा। अब सर ने आपको बताया 3 स्टेप में, तो आप 3 स्टेप में ही करेंगे। पहले मोल्स निकालेंगे, फिर रिलेशन लगा के दूसरे के मोल्स निकालेंगे, फिर मास निकालेंगे। पहले आप मोल्स निकालेंगे, फिर रिलेशन लगा के दूसरे के मोल्स निकालेंगे, फिर आपको जो भी चाहिए वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, जो भी आप निकाल लेंगे। ये मैं इसलिए आपको 3 स्टेप में करा रहा हूँ ताकि आप 3 स्टेप में करें। अगर आप कहीं पर छोटी सी मिस्टेक करते भी हैं तो अगर आप मिस्टेक करेंगे तो सिर्फ 1 नंबर कटेगा, पहला वाला, फिर आपको एरर कैरी फॉरवर्ड के तहत बाकी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 1 स्टेप में करेंगे तो आपके तीनों मार्क्स जाएंगे अगर आपका आंसर गलत होगा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करें ताकि अगर कहीं छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, 0 की मिस्टेक होती भी है, तो हमें एटलीस्ट 3 ना मिले तो 2 नंबर तो मिले ना हमें, ठीक है बच्चों। Right, sir. What is N? क्या कह रहे बेटा? एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। Okay. ठीक है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल आप लोगों को? No, sir. नो सर।